this huge reason. And when we look into the aspect of tourism also, along with tourism, many pollution also comes. That green tourism and the traditional green is actually not related to the pollution. And we should try area where we have a green like Arunachal Pradesh. That we should always concern about the pollution. So that the tourism itself is the protection of the that environment, and so that we can remain free from the pollution. That is the reason. And other issues that we have discussed today is that that the improvement of the tourism in Arunachal Pradesh, because most of the people confused about the tourism, the concept of the tourism. It was the work of the Arunachal Tour Operators Association that to give awareness to people of Arunachal Pradesh so that the tourism industry can enlarge and it can be improved in Arunachal Pradesh. Sir, in these recent years, tourism has flourished a lot, in Arunachal Pradesh. So, any development on, taking or making the Arunachal Pradesh tourism sector in a globalized platform, and to make it, more rich in a rural areas and for more of like sustainable rate. Unlike before, Arunachal, the tourism industry in Arunachal is very easy now because of that air connectivity, rail connectivity, road and internet. This could be possible because of the hard work of the Bhima Kanduji and the government of India, the Narendra Modi ji. Now it's very easy for the people to travel in Arunachal Pradesh. The air connectivity itself is signal message to the people of India and other part of the world that to enter Arunachal is not difficult, as unlike before. So it's improve, and the footfall of the tourists in Arunachal is also improved since the last 2 or 3 years. And last time you have seen that airport has opened, and the Holongi airport, and we have a 4 airport in functional, and people visiting in Arunachal is increasing day to day. सर हमने अभी ये इंटायर ये जो जितना भी जो सेशन हुआ है हमने एजुकेशन सिनेरियो का ऊपर में भी पढ़ा है रिगार्डिंग टूरिज्म सेक्टर का बारे में तो हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ इज द स्कोप ऑफ टूरिज्म टूरिज्म कोर्स इन एजुकेशन सेक्टर क्योंकि एज पर रिपोर्ट सर ऐसा होता है कि काफी स्टूडेंट है जो टूरिज्म में आपका बैचलर डिग्री लाता है लेकिन उन लोग बहुत हार्ड से फेस कर रहा है इवन आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री यू डोंट लाइक क्योंकि हमारा इतना 26 डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल में तो उसमें टूरिज्म को लेके इतना वो जॉब के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उन लोगों को देखिए जो भी सब्जेक्ट एजुकेशन जो लेता है इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी और व्हाटएवर में भी डिप्लोमा it doesn't means that everybody will get a government employee government job तो कोई भी सब्जेक्ट लेता है सपोज मैथ्स ले रहा है मैथ्स ये की बात नहीं कि मैथ्स टीचर मिलेगा लेकिन उसका अपना प्रोफेशनल एक एरिया होना चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ये कोशिश करता है कि जितना हो सके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फिलअप हो लेकिन जितना डिग्री और डिप्लोमा होगा और जितना पीएचडी करेंगे उसके हिसाब से तो गवर्नमेंट का लिमिटेड होता है कि टूरिज्म छोड़ के भी हर डिपार्टमेंट में एक लिमिटेड एरियाज होता है उसका पूरा फुलफिल नहीं होगा तो गवर्नमेंट टूरिज्म के जो सेक्टर में इसलिए द गवर्नमेंट इज गिविंग मोर एम्फेसिस ऑन द टूरिज्म सेक्टर इन फील्ड ऑफ द एजुकेशन बिकॉज वी वांटेड टू गिव awareness to the people so that they can understand that scope of tourism. Tourism itself is a way of living. तो इसी के लिए हम लोग ये करते हैं. In this session, one of the major pointers that came up was lack of educational institute for tourism basis जो provide करते हैं. As of now, there's still only one college और वो भी diploma courses provide करते हैं. So they were quite concerned कि जो students are interested in pursuing career in tourism sector, there lack of government institutions. ये देखिए आपका ये एज पर द रिक्वायरमेंट द अपग्रेडेशन एंड इंक्रीज नंबर ऑफ द सीट विल इंक्रीज तो उसका हमारे कितना रिक्वायरमेंट है उसका ऊपर से अपग्रेडेशन होगा जैसे यूनिवर्सिटी होगा कॉलेज होगा एक दिन में तो आपका जितना सब्जेक्ट नंबर्स नहीं बढ़ा सकता है ये उसका ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अपने ऊपर डिपेंड करेगा फॉर दैट केस टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज नो कमेंट So in the future में we see any education में जो tourism को पढ़ाने में अगर students are interested तो आगे में कुछ courses introduce कराएंगे government colleges में obviously आएगा क्योंकि requirement के हिसाब से क्योंकि tourism जो अरुणाचल के एक फ्यूचर और एक big industry होता है तो उसके हिसाब से तो हर चीज जो है एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्रूव होगा
सर हमने ऐसे भी नो रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर ये भी सुनने का आता है कि हर जो डिस्ट्रिक्ट होता है रूरल एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स होते हैं टूरिज्म को उन लोग को इतना कुछ स्पेशली टूरिज्म का इतना एथिक्स कुछ मालूम नहीं होता है, उन लोगों का काम जो अच्छा नहीं होता है, तो इज देयर एनी लाइक चेक एंड बैलेंस हो रहा है उस पर्पस के एक्चुअली लिए? चेक एंड बैलेंस का वो बात तो नहीं है, लेकिन वो लोग जानता है। फिर कभी कभी ऐसे होता है, कम्युनिकेशन गैपिंग होता है। द पीपल दोज हु विजिटेड द ऑफिस दे वांटेड टू नो समथिंग, तो उन लोग का क्या होता है कि समझाने में ये हो जाता है कि उन लोग सुनने वाला फिर आधा हुआ जाता है, उसका कम्युनिकेशन एथिक्स का ये तो बात है। एवरी डिपार्टमेंट हैव देयर ओन एथिक्स। ये तो बात है कि ऑफिसर वहाँ कोई स्टाफ बैठा है कि डिपार्टमेंट से कोई रिलेटेड नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। कभी कभी अपना विजिटर्स को भी ये होना चाहिए कि आप वो कि उसका पर्पज ऑफ द विजिट दे शुड नो। एंड जो ऑफिसर उधर बैठा है, जो स्टाफ बैठा है, उसको भी पता होना चाहिए कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा पब्लिक के लिए क्या सर्विस करना है। उसमें कम्युनिकेशन गैपिंग हो जाता है। तो आते समय में फिर आने वाला समय में देखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है। अभी तक तो मेरा अपना एज ए टूरिज्म मिनिस्टर सच ए कंप्लेंट हैज नॉट येट टू रीच टू मी। और हम सर काफी ये रिसेंट ईयर्स में देखा है कि टूरिज्म काफी फ्लोरिश हुआ है अरुणाचल में, काफी ज्यादा अरुणाचल का जो रेवेन्यू से बूस्ट किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट है किस तरीका से इसको जो अरुणाचल प्रदेश की जो टूरिज्म सेक्टर है इसको ग्लोबलाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म में किस तरीका से मतलब मोर ऑफ लाइक रूरल एरिया में ले जाना और प्लस उसको सस्टेनेबल बनाना, क्या कदम लाइक स्टेप ले रहा है? अभी इसमें जो है कल्चरल टूरिज्म है, उसके बाद रूरल टूरिज्म है, एग्रो बेस्ड टूरिज्म है। क्योंकि इस साल हमारा जो UNWTO ने भी अभी ग्रीन इन्वेस्टमेंट थीम दिया है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो इसके ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी डिसाइड किया है कि इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद जो है एडवेंचर टूरिज्म है, उसके बाद कल्चरल टूरिज्म जैसे मैंने अभी मेंशन किया है, रूरल टूरिज्म है, एग्रो बेस्ड टूरिज्म है, इको टूरिज्म है। तो इस तरह का जो टूरिज्म है वेलनेस के ऊपर भी अब हम लोग जोर देंगे, क्योंकि हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स का अपार संभावना है। तो ये सबको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है अभी प्लान कर रहा है, और जो भी ऑनगोइंग फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके ऊपर में भी अभी जोर शोर से अभी हम लोग का टेकअप करने के लिए लगा हुआ है। और जैसे अभी चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर पर्यटन शिक्षा विकास योजना है, उसके बाद अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरा दिया है ये युवा पर्यटन क्लब्स। तो ये सब चीज़ को अभी हम लोग का भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर में हम लोग का प्लानिंग कर रहा है, और इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का हम लोग कोशिश कर रहा है। हुआ है। Would you like to give some more highlight on this event? Yes, this is actually an annual event, but this time we are doing it after a long time, and this is actually to synthesize, to bring all the tourism stakeholders together. And I think we are very lucky to have today so many participants from different parts of Arunachal, and also different organizations like Arunachal Pradesh Tour Operator Station, plus all Arunachal Pradesh Public Transport Federation has also joined in our program today. Then we also had Arunachal Hotel and Restaurant Association members. Like that, we also had Yuva Tourism Club members, which is like very important to move the engine of tourism. And we also have heard about tour operators लोग का कुछ selections वगैरह भी होगा. Could you like give us more insightful information on that? This is the 14th after general conference come election. Yes, election process is ongoing, and there's a committee. This one, which is looking after the election process, and in fact, we have a meeting at 5 p.m. today, and then the announcement of the new body will be done. Most probably by tomorrow, you'll have all the news. आज बहुत लोग यहाँ पे हमने देखा, स्पेशल गेस्ट आया है, मिनिस्टर भी आया था, एडवाइजर टू टूरिज्म भी आया है, और बहुत लोग ने टूरिज्म के ऊपर में बातें किया है, और इवन टूर ऑपरेटर्स के बारे में भी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ टूर ऑपरेटर इन अरुणाचल प्रदेश, एंड हाउ इम्पैक्ट इज द वर्क हेल्पिंग द स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग द टूरिज्म सेक्टर एंड इन रेवेन्यू?
आपने तो सुना ही होगा, मंत्री जी ने बोला है कि टूर ऑपरेटर्स आर द बैकबोन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन अरुणाचल। और आपने ये भी देखा होगा कि 5 टॉप टूर ऑपरेटर्स हु हैव पेड हाईएस्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, उनका भी फेलिसिटेशन हुआ है। So this is a sort of recognition given to the tourism industry and to the tour operators. So and we see that there's a bright and very good future we see. So Arunachal being very beautiful and in the northeast is the whole focus is on the northeast. And when we say focus on tourism on northeast, then Arunachal is again the main focus point. So we are very optimistic that with the help of the government, with the help of our tour operator friends, tourism stakeholders, our tourism things will go ahead with the infrastructure like good road connectivity, with good airports, train station coming up, with this internet connectivity, going to different locations within Arunachal, and a lot of good things are happening. So more and more tourists are coming, and moreover, Ministry of Tourism, Government of India is also giving a lot of focus to Arunachal Pradesh, and with Pema Khandu government in the state and with the Narendra Modi government in the center, we are really getting very good. Feelings that our hard work is paying off, and tourism is really going to bloom, because as the Honorable Minister has already said that two industry in Arunachal will flourish, the tourism industry and the hydropower. And we today, you have seen so many stakeholders are there, and we are all serious about how to take tourism ahead. टूरिज्म को और आगे मतलब आगे और ज़्यादा स्टैब्लिश करने के लिए हाउ इज़ दिस टूर ऑपरेटर्स गोना हेल्प द टूरिज्म सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द टूरिज्म सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश इन अ ग्लोबलाइज प्लेटफॉर्म में, एंड टू मेक इट लाइक मोर एक्सेसिबल इन रूरल एरियाज एंड और सस्टेनेबल करवाने के लिए? यस, अभी आपने देखा होगा कि लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इज गिवन ऑन द सस्टेनेबिलिटी. तो अरुणाचल वैसे भी it's we are trying to promote class tourism, not mass tourism. So that's why I think good revenue will come, and we don't want to spoil our tourism prospects with mass tourism, जहाँ पे वो drugs and other unwanted things happen. तो वो हम कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, and we are very lucky that we have inland permit system in Arunachal Pradesh. तो उससे मतलब जो आपका unwanted नेगेटिव टूरिज्म जो है उसको काफ़ी रोक लगा रखा है. तो आई एम श्योर विद द क्लास टूरिज्म हैपनिंग इन अरुणाचल एंड विद द गवर्नमेंट सपोर्ट विद टूर ऑपरेटर्स रियली वर्किंग हार्ड, एंड वी आर जनरेटिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. तो आई थिंक वी आर रियली मूविंग अहेड. So lastly, do you want to add any words about APTOA and today's event? APTOA now, APTOA is a very old and very is the main tourism stakeholder, main body, state body for promoting tourism, and now we are going to enter a next level, I would say, because now earlier we had very few tour operators, we had very few infrastructures and all, but now so you must have seen today so many tourism students we have invited. So they are also going to be tour operators in a year or two. They are all going to be the district tourism officer or TIOs, and hotel owners, homestay owners, and tour guides, tour operators. So our government and our tour operator association, we are giving training to the new generation, and we are coming up with HRD which will actually support tour operators. So we don't have to hire our guide from other places, we don't have to hire our cooks or porters from other states. We will have ample support system from our own sources. This will generate revenue, this will generate employment for our youths. So that's why we tour operators, I think we are really lucky now to have support of the government, and very soon I think you all will see there's a sea change in tourism activities happening in Arunachal Pradesh.